Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Basic Mathematics Class 4 by Coral Publisher. Today we are starting Chapter 8, Fractions. So fractional numbers, different kinds of fraction. You have learned that 0, 1, 2, 3, 4, etc. These are called digits. You have also learned how a fractional number is formed. Here we are recalling it again. Suppose your brother has bought one cake. He wants to divide it among you and your three friends. Since he has only one cake, he will have to cut it into 4 equal parts. Then he can give it to you all. यानी each part कितना होगा 1 out of 4 यानी 1 by 4 of the whole cake. So what are you getting? You are getting 1/4 of the cake, and your three friends are getting 3 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 यानी 3 parts, 3 by 4 of the whole cake. Your two friends will get 1 by 4 plus 1 by 4 यानी 2 by 4 of the whole cake. Okay, now here 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, these are fractional numbers. Now 1 by 4 means to divide one cake into 4 equal parts and take 1. 2 by 4 का मतलब क्या है? Divide one cake into 4 equal parts and take 2 parts. So this is also equivalent to 1 by 4 into 2, which means to divide 2 cakes into 4 equal parts and take 1 part from each of the 2 cakes. Okay? 3 by 4 means to divide one cake into 4 equal parts and take 3 parts. और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 3 cakes ले लें और उनके 4 parts करके 1 part तीनों cake में से ले लें. This is equivalent to 1 by 4 into 3, which means to divide 3 cakes into 4 equal parts and take 1 part from each of the 3 cakes. What does the fraction 5 by 6 mean? It means that if you have one cake, divide it into 6 equal parts, and from these 6 parts, you take 5 parts. Or if you have 5 cakes and you divide each of the 5 cakes into 6 equal parts and then take 1 part from each of the 5 cakes. So we can write it like this: 5 by 6 equals to 1 by 6 into 5 यानी 5 by 6. So we see that each fraction consists of two numbers and a division line or fractional bar in between. The number above the division line is called the numerator, और जो नंबर नीचे है उसको हम बोलते हैं denominator. So numerator 7, 9 denominator, and this is the division line. Now we are coming to proper fraction. If in a fraction the numerator is less than the denominator, then that fraction is said to be proper fraction. And improper क्या होता है? If in a fraction the numerator is greater or equal, अगर numerator बड़ा हो जाता है या equal हो जाता है denominator के, तो वो बन जाता है improper fraction. Now one point is for you: an improper fraction consists of a number and a proper fraction. देखो कैसे mixed fraction है. If a fraction consists of an integral number and proper fraction, then that fraction is called a mixed fraction. अगर हम एक whole part, एक integral part लेते हैं और एक proper fraction, उसको हम combine करते हैं like this: 1 whole 4 by 7. तो 1 क्या है? इंटीग्रल पार्ट, और 4 by 7 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट. ऐसे ही आपके पास 7 whole 1 by 2, 7.5, 12 whole 1 by 8. So these are mixed fractions. Now unit fraction. Unit fraction means a fraction in which numerator is 1. जहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, like 1 by 3, 1 by 4, 1 by 7, 1 by 2. Now example 1, write 7 by 13 in the form of division, यानी 7 divided by 13. Example 2, write 6 divided by 11 in the fraction form. You can write 6 upon 11. Okay, very simple.
Now exercise 1 is based on such type of question. You can try these one on your own. Now we are coming to equal fractions or equivalent fraction. जब fractions equal होंगे, let us see this chart. इस फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं 3 इक्वल पार्ट्स है जिसमें से 1 शेडेड है। सेकेंड में आप देखो 6 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें 2 शेडेड हैं। देन नेक्स्ट में हमने 12 पार्ट्स लिए जिसमें से 4 शेडेड है। देन नेक्स्ट में हमने 24 पार्ट्स लिए जिसमें से 8 शेडेड हैं। सो सिंस द शेडेड पोर्शंस आर इक्वल देयरफॉर वी हैव, हमारे पास फर्स्ट से क्या आएगा 1/3, यहाँ से क्या आएगा 2/6, यहाँ से क्या आएगा 4/12 एंड हियर 8 out of 24. So you can see these all are same, equal. So these are equivalent or equal fractions. So how do you find the equivalent fraction of a given fraction? आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, आप उसका इक्वल या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? To get an equivalent fraction, we multiply or divide the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. Like example 3, find the equivalent fraction of given fraction 2/5. देखो 2 और 5 को हम सेम नंबर से डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई पहले 5 से कर दो या 2 से कर दो, लाइक 2 into 5, 5 into 5. 2 into 6, 5 into 6, 2 into 7, 5 into 7. So you are getting these fraction. So all these fraction are equivalent fraction, right? Now example 4, is it true that 3/4 equal to 6/12? तो इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 12, 36 and 4 into 6, 24. जब मल्टीप्लाई करने के बाद पार्ट्स इक्वल आ जाए इट मींस दीज आर इक्विवेलेंट, और अगर नहीं होंगे मींस दीज आर नॉट इक्वल। सो दीज आर नॉट इक्वल, और इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को, फ्रैक्शंस को। नाउ एग्जांपल 5, फाइंड द मिसिंग नंबर 2/3 इक्वल्स टू डैश अपॉन 12 इक्वल्स टू 18 अपॉन डैश। अब 2/3 एक फ्रैक्शन के इक्वल है जिसका डिनोमिनेटर हमें पता है, उसका न्यूमरेटर मिसिंग है। अब आप देखो 3 और 12 में क्या रिलेशन है, यानी 3 into 4 करके 12 आ जाएगा, तो हमें ऊपर भी क्या करना है 2 into 4 यानी 8। सो व्हाट इज आंसर 8/12। ऐसे आपके पास दे रखा है 2/3, 18 नीचे वाला नंबर मिसिंग है, 18 और 2 में क्या रिलेशन है, यानी 2 9s 18 होगा, तो आप नीचे कर दो 3 9s, तो आपके पास क्या आ जाएगा वो 27। बिकॉज दिस इज द रूल, जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं? अ फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा यानी वो क्या बन जाएगी उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? We start by trying to divide both the numerator and the denominator by common factors from the lowest to the highest till the only common factor is 1. See example 6. Find the simplest form of 6/14. 6 और 14 दोनों 2 से कट हो जाते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3s 2 7s। अब 3 और 7 आगे किसी सेम नंबर से कट नहीं होंगे, तो दिस इज द simplest form. Now example 7, express each of the following in the lowest form यानी simplest form. 9/15 both are divisible by 3, 3 से कट कर दो 3/5 आगे कट नहीं होंगे, तो this is the answer. 52/72 दोनों को कट कर दो, आप पहले 2 से कट कर सकते हैं, 26 36 again by 2 13 18।
ओके, सो आंसर इज 13/18। और आप डायरेक्ट 4 से भी कट कर सकते हैं, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? Now exercise 2, based on such type of examples you can try these one. Now changing improper fraction into mixed fraction. अब हम improper को mixed में change करेंगे. Suppose आपके पास 3/2 है, यानी numerator जो है वो denominator से बड़ा है, which means that we divide each of 3 cakes into 2 equal parts and then take 1 part from each of the 3 cakes. हमने क्या किया, 3 केक्स ले लिए जिनके 2 पार्ट्स कर दिए और उनमें से 1 पार्ट ले लिया, लाइक केक 1, केक 2, केक 3। तो केक 1 में से 1 पार्ट लिया, केक 2 में से 1 पार्ट लिया, तो ये क्या बनेगा, पूरा एक केक बन जाएगा। और 1 पार्ट यहाँ से यानी 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1.5, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। Now example 8, convert 56/9 into mixed fraction, यानी divide 56/9, 9 6 2 is remainder। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम लिख देंगे as the integral part। See, step 1, divide the numerator by denominator. Step 2, write the quotient as the integral number, and then step 3, put the remainder in the numerator of the fractional part and the denominator of the given fraction as the denominator of the fractional part। तो डिनोमिनेटर में तो 9 ही रहेगा, जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर। सो दिस इज 6 होल 2/9। नाउ चेंजिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर। अब कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है। See example 9, convert 4 whole 1/7 into an improper fraction. It's very easy. क्वेश्चन यहाँ पे 4 है, 4 into 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दो। ओके, बिकॉज यू नो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, 4 into 7 plus 1, तो बन जाएगा 29/7। ओके, दिस इज 29/7। डिनोमिनेटर वही रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। सी एग्जाम्पल 10, कन्वर्ट 3 whole 2/5 into an improper fraction। सेम, 5 into 3 15 plus 2, 3 into 5 plus 2 यानी 17। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 17/5। I hope this is clear to you. Now we are talking about like fractions. Fractions whose denominator are the same, those are like 1/5, 2/5, 4/5. These are like. Fraction with different denominators are called unlike. जिसमें denominator different होगा उसको हम बोलते हैं unlike. Unlike means not the same. So unlike fraction have different denominators. Now comparison among fractions. Consider two fractions 3/4 and 5/6. Now one of them must be greater than the other or they must be equal. Now how do you tell this? आप कैसे compare करोगे? तो आपने कैसे करना है, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। लाइक फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर डिफरेंट बट डिनोमिनेटर सेम। तो आपने सिंपली आपने क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 7/8 गिवन है, तो सबसे बड़ा 7 है, यानी 7/8 इज द largest fraction and 1/8 is the smallest fraction. So we see when two or more fractions have the same denominator, then the order of the numerator will help us in comparing them. So the fraction having larger numerator will be greater than the fraction having smaller numerator. अब हम कंपेयर करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को। एग्जाम्पल 11, विच इज ग्रेटर बिटवीन 1/5 एंड 1/6। पहले तो आप देखो न्यूमरेटर सेम है, इसमें 1 है, तो हम किसे कंपेयर करेंगे। जब न्यूमरेटर सेम हो तो आप कंपेयर करो डिनोमिनेटर को। जो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। When the numerator are same, the fraction whose denominator is smaller,
will be greater than that whose denominator is greater. इसमें उल्टा होता है, तो 5 smaller है यानी 1/5 is greater than 1/6. Okay, so like this they have given us. Now example 12, fill in the box with less than or equal to or greater than. Let's see 8/9 and 4/9. 8/9 और 4/9 में कौन बड़ा है? 9 है दोनों के पास, हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, so 8 is greater, so 8/9 is bigger than 4/9. 2/5, 3/5, again same denominator है, compare numerator, so this is bigger. 7/11, 8/11, again denominator same, compare numerator, this is bigger. Then D part, 7/12, 6/12, again denominator same, compare numerator, 7/12 is bigger than 6/12. Now example 13, arrange the following fraction in ascending order. A part, 5/11, 3/11, 7/11, 1/11 and 6/11. अरेंज करना है असेंडिंग में यानी इंक्रीजिंग में, यानी छोटे से बड़े में. अब आप देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को. जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. सो 1/11 is less than 3/11. इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी 1/11 less than 3/11 less than 5/11 less than 6/11 less than 7/11. ऐसे नाउ बी पार्ट, 3/8, 3/7, 3/5, 3/9, 3/11. अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हमें पता है जो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो आप देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 5, यानी 3/5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सो 3/5. उसके बाद 3/7, देन 3/8, 3/9 एंड 3/11 इज द स्मॉलेस्ट वन. फिर हम इसे अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में. Now example 14, arrange the following fraction in descending यानी decreasing, यानी bigger to smaller. तो A part like fraction है, denominator same है, compare कर दो simply numerator को, तो हमें सबसे पहले बड़ा कौन सा होगा इसमें? 10/13, then 7/13, 6/13, 3/13 and 2/13. So this is a descending order. अब आ जाओ B part में, अनलाइक है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, और हमें पता है जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा फ्रैक्शन होगा, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है इसमें 12, यानी 5/12 सबसे छोटा है. ओके, और सबसे बड़ा है 5/8, तो 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12. So this is the decreasing order. I hope this is clear to you. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा. So exercise 3 is based on such type of examples. You can try these one. Now we are coming to addition of like fractions. Hardik's mother has a chocolate. She divided it into 8 pieces and gave 1 piece to his brother and 2 pieces to his friend. So what fraction of the whole chocolate did she distribute between them? तो 1 out of 8 brother share, friend share 2/8, यानी 3/8 of the whole. So there is one more example like here, picture given 5 parts है, 2 shaded है यानी 2/5, 3/5 है, 3 part shaded. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल 2 + 3 यानी 5/5. So when you add like fraction यानी जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, हमें सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करना है एंड राइट द सम ओवर द सेम डिनोमिनेटर. वेरी सिंपल. सी एग्जाम्पल 15, एड 8/9 एंड 5/9. सिंपली आप न्यूमरेटर ऐड कर दो, 8 + 5 यानी 13/9. नाउ कम टू सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन.
इसमें क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। माधव हैड 4/5 ऑफ अ केक, ही गेव 1/5 ऑफ इट टू अशोक, हाउ मच केक इज लेफ्ट विद हिम। उसके पास था 4/5, he has given 1/5, दोनों को माइनस करेंगे, यानी सिंपली न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे 3/5। So difference of like fraction means difference of numerator upon common denominator। जैसे एग्जाम्पल 16 है, फाइंड 17/65 माइनस 11/65। तो 65 लाइक फ्रैक्शंस है, तो 65 नीचे रहेगा, 17 माइनस 11, 6 upon 65। So exercise 4 is based on such type of question. You can try these one on your own. I hope this is clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.